Good morning, students. I welcome all the students of class 7 to go through the Civics chapter 1. Civics chapter 1 explains about equality. Now we have to see what type of equality we find in our society, in our family. Do we face or our society face any type of discrimination? If the society is facing any type of discriminations, किसी भी तरह का भेदभाव है, इसका मतलब वो इक्वलिटी नहीं है. Now we are talking about where generally we see in our society that discriminations are taking place. भेदभाव होता है. People understand, one group understand themselves superior than the other. जैसे ही एक ग्रुप अपने आप को दूसरे से सुपीरियर महसूस करना शुरू करेगा, हम समझेंगे कि वहाँ डिस्क्रिमिनेशन है. There is no equality. Now just see, I am giving you few examples and you have to explain, you have to understand. Discriminations. Economy, discrimination. Religion, discrimination. Caste, discrimination. Gender, discrimination. Yes. There are few types of discriminations that we see in our society. It is the discriminations on the basis of economy. It is the discriminations on the basis of religion. It is the discriminations on the basis of caste. Discrimination on the basis of gender and discrimination on the basis of race. We will discuss one by one. Where do we find equality? Political equality. In the sphere of politics, we find there is the equality. In politics or in political equality, what do we mean? Everyone has got the right to vote irrespective of their caste, their religion, their gender, their economic status. It is called universal adult franchise. It means anyone who has attained the age of 18 years in our country, anyone who has attained the age of 18 years has the right to vote, irrespective of their caste, irrespective of their religion, irrespective of their gender. Everyone has the right to vote, and each value of vote of each person is one. Means it is one person, one vote and one value. एक आदमी एक वोट देगा, उसकी गिनती भी एक ही होगी. Who
whoever the person is, maybe a worker, maybe an industrialist. एक इंडस्ट्रियलिस्ट की वोट की वैल्यू एक ही होगी और एक जो वर्कर है, लेमन है, रिक्शा पुलर है, इफ द पर्सन इज कास्टिंग हिज वोट, उनके भी वोट की वैल्यू वन ही होगी. द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन learned educated person is one and the value of vote of an elected person is also one. It means there is no discrimination on the basis of economy, whether one is rich or poor, or one is of high educated and uneducated, or whatever background one has, social background one has. It is no discrimination. It means we find equality in the political affair, universal adult franchise or universal adult suffrage. In this one, we find that we have got the equality. Now, we will discuss about what are the different types of inequality that we find in our society. We have to see the inequality or discriminations that we are finding in our society. It is on the basis of economy. Economy is rich and poor. Religion, धर्म के आधार पर. कास्ट, जाति के आधार पर. जेंडर, लिंग के आधार पर. And race, it is a biological structures that differ from one person to another person, people living one area to another area. Let us economy. Few persons have the ample resource available with them. उनके पास पूरा रिसोर्स अवेलेबल है. और कुछ लोगों के पास रिसोर्स बिल्कुल ही नहीं है. Resource means the thing that one can use it. It means the society has been divided into two big sections. One have, one have not. एक के पास रिसोर्स है, एक के पास रिसोर्स नहीं है. एक के पास बहुत पैसा है. Too much money one has got, and if one, the rich people, when he suffer from any disease, any type of ailment, simply he or she moves to a big private nursing home or hospitals where the person is treated and give proper attention. They need not to stand in a queue. एक लंबी लंबी लाइन में उनको लगने की जरूरत नहीं होती. गए, अपॉइंटमेंट लिया, but the poor peoples who are not able to pay for their treatment, they go to the government hospitals, municipal hospitals. They have to make a long queue. It means to find the difference. One using the resource, they are wasting the food. Another one who are deprived of 2 square meal food. दो वक्त की रोटी नहीं मिलती है, दो वक्त का खाना नहीं मिलता है, भूखे रहते हैं, भूखे सोते हैं, और कुछ लोग है थाली में खाना बर्बाद करते हैं. It means this is a discrimination in our society. And ये तो होता है, लेकिन कभी तुम देखो किसी rich peoples को, generally I say, if you see in your locality itself, they hand over their food to the and give the assistance to the poor peoples. कि तुम बहुत गरीब हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, चलो 10 किलो अनाज, 20 किलो अनाज, 100, 200, 1000, 2000 रुपए का हेल्प कर दिया. नहीं होता. He love to destroy, बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन हेल्प नहीं कर सकते, because they find the person do not belongs to our groups. ये discrimination है. This is a discrimination on the basis of economy.
The another discriminations, it is on the basis of religion. सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी में. As soon as people start thinking that my religion is better than the others, मेरा धर्म, मेरा रिलीजन दूसरे के रिलीजन से अच्छा है, बेटर है in all the steps. As soon as this feeling comes, discrimination starts. Hindu or Hinduism thinks that their religion is better than the others. Islam thinks that their religion is better than the others. हिंदू में बहुत सारे देवी देवता का पूजा करना पड़ता है, हम तो सिर्फ एक ही पूजा करके काम चला देते हैं, जब वो सारा कुछ हमको मिल जाता है. Christian thinks my religion is better as soon as this feeling comes among the religious groups. The discrimination starts. ये discrimination start हो जाती है, and sometimes it leads to conflict, religious conflict. लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद हो जाती है. अरे लड़ाई झगड़ा होगा तो क्या होगा, ये राइट हो गया, दंगा हो गया. ये दंगा का कारण क्या है, ये राइट्स का कारण क्या है? तो राइट्स का कारण है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. देन वी हैव आल्सो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. क्लास 6 से पढ़ते हैं, our society was divided into 4 groups especially: Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudras. You have read about it. Still we are making the discriminations on the basis of caste. Still we have upper caste, we have lower caste, we have different groups. In the Hinduism you find there are different groups. In Islam is so, it has been divided. We also discriminate, we are seeing, but it is reducing more. At least caste discriminations and gender discriminations is reducing due to development in education, due to urbanization. शहरीकरण, लोग शहर में आने लगे हैं. शहर में कास्ट सिस्टम कम है, शहर में बेटे और बेटी के बीच डिस्क्रिमिनेशन कम है. ये अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण होने से और एजुकेशन बढ़ने से, शिक्षा बढ़ने से, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव, ये कम हो गया. Then we have the discrimination on the basis of race. Race means biological traits. If you see the peoples of the Arunachal Pradesh, if you see the peoples of Northern Plain, or if you see the peoples of South India, it can be discriminated. आसानी से लगभग पहचान है. नहीं तो कम से कम जो हमारे हिली रीजन के पीपल हैं उनमें और हमारे जो फिजिक स्ट्रक्चर उनमें डिफरेंट है. If you see the people of African people and Australian people can be easily discriminated. Their skin color, their hairs, जो जितने गर्म जगह में रहेगा उनका बाल उतना ही हार्ड होगा, कड़ा होगा. साउथ अफ्रीका देखो, नाइजीरिया देखो, केनिया देखो, वो बिल्कुल इक्वेटर के आसपास की कंट्रीज है. वहां गर्मी ज्यादा होगी तो हेयर स्टाइल चेंज हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा. और जो जितने ठंडा में रहेंगे उनका हेयर उतना ही सॉफ्ट होगा, कलर भी ब्लैक नहीं होगा. जस्ट सी द ऑस्ट्रेलियन पीपल्स. ये बायोलॉजिकल ट्रेट्स है. इट इज अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द कलर ऑफ स्किन दैट वी विल रीड अबाउट इट. In this class, we will read the discriminations on the basis of religion, caste, and race. 3 stories. First, we will discuss the discriminations on the basis of caste. Discriminations on the basis of caste. One example that is given in your book.
This is about Om Prakash Valmiki. Discriminations. Om Prakash Valmiki. You might have gone through the name of Om Prakash Valmiki. Om Prakash Valmiki, इनका जन्म 1950 में और 2013 में इनका डेथ हुआ। 1950 में जन्म हुआ, 2013 में डेथ होगी। He was a writer and poet. He was belonging to Muzaffarnagar in UP, Uttar Pradesh. He has written the collection of poem also, as well as the story. He has also written his autobiography about his own life. Name of book is U-Turn 1997. This book was published in 1997. U-Turn. What this book is about? क्या है इस बुक में? इस बुक में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने एक्सप्लेन किया है what type of discriminations he had to face when he had gone to the school in his childhood. बचपन में क्या क्या discrimination? He says that when he went to the school, he was asked by the teachers to sweep the ground, school ground. When he saw, oh my goodness, इतना बड़ा ground, and it was big one than Om Prakash Valmiki's physical steps. उसके फिजिक के हिसाब से, उसका बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से छोटा बच्चा था, वो बहुत बड़ा था. Since it was given order by the teachers, so had to keep the sweeping the ground. His face was covered with the dust. Eye was also filled up with the dust. आँख में धूल पड़ रहा है, चेहरे पे धूल है, पूरे शरीर में धूल है. He was also feeling the thirsty, but even he was not allowed. While in the sun, he was sweeping the ground at the school. Doors, windows, veranda, ground, everything. Other students were sitting in the classroom and making a study. He was on a continuous watch under the teachers. Through the window, teachers were watching. काम कर रहा है कि नहीं, झाड़ू लगा रहा है कि नहीं रहा. Why he was allowed to do so, and why he was asked to sweep the floor? Simply, he belonged to a lower caste. It means we can say he was discriminated on the basis of caste. It trend continues. चलता रहा, 2-3 दिन चलता. One day, while his father was going or passing by the school, he saw his son is sweeping the ground. मेरा बेटा झाड़ू लगा रहा, बाकी बच्चे क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे. He came, hold his hand, and started walking away with his son. And in the meantime, he actually did not confronted with the teachers, but still he warned him, my son will continue studying in this school, but he will be not alone. Many one of the same group would be following. Then what will you do? आप शिक्षक हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था.
मेरा बच्चा ही पढ़ेगा, ये अकेला नहीं है, वो उसमें बहुत सारे लोग हैं. This type of he had made the discriminations in the society because he belonged to the lower caste. Being of the lower caste, he was discriminated. Om Prakash Valmiki, it is still in our society, but it is reducing. I have told you the discriminations on the basis of caste अब कम हो रहा है, रिड्यूस हो रही है ड्यू टू डेवलपमेंट इन एजुकेशन. शिक्षा बढ़ रही है, जैसे लोगों में शिक्षा बढ़ रही है, जात पात कम होता चला जाता है. शहर में बहुत ही कम हो गया है, गांव में अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है. देन another discrimination that we have to go, it is on the basis of religion. Discrimination on the basis of religion. Discriminations on the basis of religion. In this one story is given about Mr. and Mrs. Ansari. It is also a story of a big cities in India. In a city, if a person has to sell his house, purchase a building or house, or give or take it on the rent, रेंट पे देना है, लेना है, तो शहर में बड़ा डिफिकल्ट होगा. किससे पूछे कहाँ मकान खाली है किराए के लिए, कौन बेचने वाला. तो देयर इज अ मिडिलमैन दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी डीलर. ये प्रॉपर्टी डीलर्स मैनेज कर देते हैं. सपोज दैट कि मुझे अपना मकान बेचना है, तो मैं नियर बाय प्रॉपर्टी डीलर के पास बता दूंगा कि देखो कोई तुम्हारे पास आए तो बता देना कि आई एम विलिंग टू सेल माय हाउस, दिस इज द प्राइस, आई हैव फिक्स्ड इट, लेटर ऑन इट विल बी नेगोशिएटेड, बातचीत हो जाएगा. द पर्सन हु इज विलिंग टू परचेज दे विल अप्रोच माय डीलर, क्या आपके पास कोई मकान है, मैं खरीदना चाहता हूं, मुझे इस तरह की जरूरत है मकान का. दे विल जस्ट दिस प्रॉपर्टी डीलर दोनों को मिला देगा, बातचीत करवा देगा. Means it becomes easy. So in big cities, we found a property dealer. Mr. and Mrs. Ansari also approached a property dealer. प्रॉपर्टी डीलर, हाँ मेरे पास है, कई मकान मैंने देख रखा है किराए के लिए खाली, चलिए चलते हैं. और जैसे ही वो एक अपार्टमेंट में गए, the landlady first agreed, चलो दे देते हैं, हाँ दे देंगे, सारा बात फाइनल हुआ, दे देंगे. तब लैंडलेडी ने पूछा कि व्हाट इज योर नेम सर. एज सून एज दिस पर्सन टोल्ड माय नेम इज मिस्टर साई, दिमाग चौका. लैंडलेडी ने एक एक्सक्यूज दिया. क्या एक्सक्यूज बनाया कि सर देखिए आप तो नॉन वेजिटेरियन हैं, or in my society all the people are vegetarian, and if you cook the food, then the people who are living in our society would feel alienated, they will not feel comfortable, उनको अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा. Ansari as well as the property dealer were shocked, उनको बड़ा आश्चर्य लगा. अब बोलोगे आश्चर्य क्यों लगा? At the same time, when these statements were being delivered, they were able to smell the fish is being fried in the neighbors. पड़ोस में फिश फ्राई की स्मेल आ रही है, और लैंडलेडी क्या कह रही है कि हमारे यहाँ सारे कौन है, वेजिटेरियन है. What does it mean? It means the landlady was not willing to have or give his house on rent to Ansari because he belongs to the different religious group. Ansari was discriminated on the basis of religion he belonged to. The story was not end over here.
वो जाते रहे, 2, 3, 4 अपार्टमेंट में गए. Everywhere almost the same type of excuses were made. प्रॉपर्टी डीलर ने सजेस्ट किया, व्हाई डोंट यू चेंज योर नेम, अपना नाम ही चेंज करो, झंझट छोड़ो ना, मकान तो मिल जाएगा. ये जो मिस्टर अंसारी बोलते हो, मिस्टर अंसारी को हटा दो, लिखो मिस्टर कुमार. बट अंसारी refused to do so because his dignity was violated. उनके सम्मान को ठेस लगी है. सम्मान को क्यों ठेस लगी है? क्योंकि उनका डिस्क्रिमिनेशन हुआ on the basis of religion he belonged to. It means two type of discriminations that prevail in our society we have gone through. One was on the basis of caste, another one on the basis of religion. These two stories is from our own country. Another discrimination story that is given in your book, that is not from our country, it is from another continent. It is on the basis of race that we will discuss it. Another discrimination, it is on the basis of race. रेस का मतलब ये मत लगा लेना कि दौड़ लगा रहा है. रेस का मतलब बायोलॉजिकली इट इज डिफरेंट. जस्ट इन द बिगिनिंग आई हैव टोल्ड यू द डिस्क्रिमिनेशंस और भेदभाव या डिफरेंशिएट वी कैन डू द टू पीपल्स, वन इज फ्रॉम द अफ्रीका एंड अदर वन इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कैन बी इजीली डिस्क्रिमिनेटेड by their physique, their color skin, their hair styles. उनको हम हेयर स्टाइल मतलब वो वाला नहीं, हेयर स्टाइल का मतलब कि हेयर का स्ट्रक्चर देखोगे, जो अफ्रीकन हो गए उनके पास एक पोनी नहीं होता, मिनी पोनी होता है, छोटा छोटा पतला, क्योंकि उनके जो हेयर होते हैं वो हार्ड होते हैं, जहाँ टेम्परेचर ज्यादा वहाँ ज्यादा. इन अमेरिका वी आर टॉकिंग अबाउट द यूएसए. ए स्टोरी इज अबाउट यूएसए. यूएसए में आपको दोनों तरह के लोग मिले, व्हाइट पीपल्स भी हैं और ब्लैक भी हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ब्लैक है वो ओरिजिनल इनहैबिटेंट, अमेरिका के असली निवासी. जो व्हाइट है दे आर नॉट द एक्चुअल और ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ यूएसए. They have come from the other countries, France, Germany, Spain, Australia, then England. These are the white peoples. Everywhere in society, in the especially in the African countries, where the white peoples had ruled, and the same happened in the USA also, the segregation policy were there. What does this segregation policy mean? Segregation means white के लिए और black के लिए अलग अलग, सब कुछ white के लिए black के लिए अलग अलग. थिएटर भी है, अमेरिका में भी सब कुछ ऑलमोस्ट सेग्रीगेटेड था. बस में भी जो चलती थी, बस में भी सेग्रीगेशन था. तो बस के अंदर कैसे सेग्रीगेशन था? बस में बांट दिया गया था, जो फ्रंट सीट होगा, आगे वाला सीट होगा, वो उसके बाद रिजर्व फॉर द व्हाइट, व्हाइट के लिए रिजर्व था. जो पीछे वाला सीट था, इट वाज रिजर्व फॉर द कलर, नॉन व्हाइट के. कलर का मतलब कोई सिर्फ ब्लैक तो नहीं बोले, कलर में दो आ जाते हैं. एशियन पीपल्स, कॉम्प्लेक्शन ऑफ एशियन पीपल्स आर येलोइश इन कलर. हम लोग एशियन हैं, जो गोरे होते हैं हम लोग, तो जिसको हम लोग गोरे बोलते हैं, वो व्हाइट नहीं होते, वो येलोइश कॉम्प्लेक्शन के होते हैं. अफ्रीकन आर ब्लैक इन कलर एंड ब्रिटिश पीपल्स, यूरोपियन पीपल्स, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन पीपल्स आर व्हाइट इन कलर. उनका देख लीजिए, अपने यहाँ के जो गोरे हैं उनका देखो, दोनों में अंतर आएगा. उनका व्हाइटिश है, हम लोग का येलोइश है. तो दे वे डिस्क्रिमिनेटिंग this yellowish as well as the black.
That's why it is written the colors. One story is this discrimination taking place Rosa Parks. She is called African American. African American means that her forefather has come to America from Africa. Simply, since she is from the Africa, she will be the black. There was a segregation policy, भेदभाव का policy था ही. She was working as a seamstress in the USA. एक दिन वो अपने काम से थकी हुई लौट रही थी. She was very much tired. जब बहुत टायर्ड हो गई, जाके बस में बैठ गई. कहाँ बैठ गई? जो सीट कलर्स के लिए रिजर्व था उसी सीट पे. लेकिन कुछ होना था. ये घटना है 1/12/1955, 12 मतलब दिसंबर, मतलब कि सीरियस कोल्ड. अब थक जाओगे, बहुत काम कर लियो, फिजिकली बहुत टायर्ड हो गए हो, तो यू विल लव टू सिट. And if after a long work, if you are sitting it and someone asks you to get it up, it would irritate you. रोजा पार्क्स अपनी जो कन्फाइंड सीट था उसी पर बैठी थी, लेकिन उसी टाइम उस बस में एक व्हाइट पीपल्स आ. तो बस ड्राइवर जेम्स एफ Blacks. James F. Black. Black requested to Rosa Parks to vacate the seat for the white people. सीट खाली कर दे. किसके लिए सीट खाली कर दे? तो व्हाइट सीट. बट शी रिफ्यूज टू डू सो. उसने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया. बिकॉज मैं अभी बताऊं तो बहुत थकी थी, अपने कन्फाइंड रिजर्व सीट पर बैठी हुई थी. उसके बाद भी उसको बोला गया उठने के लिए, जबकि इसके पहले अगर ब्लैक चढ़ जाते थे बस में, अगर ब्लैक वाला सीट भरा हुआ है, फुल है, और व्हाइट का सीट खाली है, फिर भी इन लोग को अलाउड नहीं था उस पर बैठने का. लेकिन उधर से इधर लोग आ जाते. इट मीन्स दिस वॉज ए टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. एंड दिस बस ऑन विच दिस इवेंट हैपेंड, it is still kept in the museum over here. USA के म्यूजियम में बस रखी हुई. And it was the starting of civil right movement in the USA. यहीं से civil right movement होगा. That's why दो USA कांग्रेस में, USA कांग्रेस जो वहां का पार्लियामेंट है, रोजा पार्क्स को बोला she is the first lady of civil rights, first lady of civil rights. And after a long wait, in 1964, Civil Rights Act was passed. According to this Civil Rights Act, the discriminations on the basis of color of skin were simply abandoned. खत्म कर दिया.
हमने अभी तक 3 स्टोरी पढ़ी है डिस्क्रिमिनेशंस। एक डिस्क्रिमिनेशंस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, वो हमारे यहाँ की स्टोरी थी, ओम प्रकाश वाल्मीकि की, यूपी में मुजफ्फरनगर। दूसरा स्टोरी हमने पढ़ा डिस्क्रिमिनेशंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, वो भी हमारे यहाँ एक बड़े शहर की स्टोरी है। तीसरा हमने पढ़ा डिस्क्रिमिनेशंस ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ स्किन, ये हमारे यहाँ की स्टोरी है, क्योंकि हमारे यहाँ के स्टोरी में कलर ऑफ स्किन डिस्क्रिमिनेशंस नहीं है, लेकिन अदर सोसाइटी में तो कहीं ना कहीं टेक प्लेस कर रहा है, नहीं कर रहा। Since it is taking place in the other society that it becomes necessary for us to go through it. It is also a type of discriminations because in higher classes you have to go through this type of discriminations also. You have to go through, पढ़ना पड़ेगा, तो पहले से अंडरस्टैंड कर लेना जरूरी है। अभी तक हमने पढ़ा डिस्क्रिमिनेशन। एक डिस्क्रिमिनेशन है जेंडर के लिए, ये स्टोरी तो नहीं है लेकिन अभी बोलूंगा तो जो हमारे सुनने वाले में है, देखने वाले वीडियो में है, गर्ल्स स्टूडेंट पहले हाथ उठाएगी, नो सर वी आर नॉट फाइंडिंग एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन आवर सोसाइटी, इन आवर फैमिली ऑल्सो, बट इट यूज्ड टू हैपन, इट स्टिल हैपेंस मोर और लेस इन द विलेज। टाउन में नहीं होता, मैं मानता हूं। टाउन में पहले बताया कि ये कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? सिंपली इट इज रिड्यूसिंग ड्यू टू द डेवलपमेंट इन एजुकेशन एंड अर्बनाइजेशन। In our society, at least in Hinduism, it is said that one can go to the heaven only if one has a male baby. बेटा होगा तो स्वर्ग जाएगा। That's why one has to many daughter waiting for a son. पहले तो पेरेंट्स के प्रॉपर्टी में भी बेटी को कोई राइट्स नहीं था। बिफोर 2005 पेरेंट्स के प्रॉपर्टी, फादर का प्रॉपर्टी was equally distributed among the male children, not the female. आज का लॉ बन गया है 2005 के बाद, ये चेंज हो गई है। गर्ल्स में ऑल्सो क्लेम द शेयर ऑफ हर प्रॉपर्टी इन हिज पेरेंट्स, इस पैरेंटल प्रॉपर्टी में गर्ल्स का भी राइट होगा। मीन्स ये सोसाइटी हमारी क्या हो रही है, ये कंप्लीटली कहीं ना कहीं चेंज हो रही है। तो वी हैव gone through the discrimination. It was on the basis of economy. We have got the discrimination on the basis of religion. We have got the discrimination on the basis of caste is there. We have discrimination on the basis of gender, and we have also discrimination on the basis of race. These type of discriminations we are finding in our society. अब आएगा कि हमारे सोसाइटी में तो डिस्क्रिमिनेशंस है, गवर्नमेंट कुछ कर रही है क्या? In the next video, we will discuss what are steps taken by the government and constitutional measure to reduce the discrimination. Till you go through this video very carefully, try to understand the types of discriminations and where do we find the equality. Thank you. Go through it carefully.